Yeah, in the last class, we discussed about the intro of federated learning. We have gone through the definitions, and then we also gone through that what are the needs of it, right? Now, if we talk about the FL architecture, okay, so today we'll start with first FL, माने federated learning architecture. तो क्या होता है इसमें सेंट्रल सर्वर कोऑर्डिनेट्स मॉडल ट्रेनिंग अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिवाइसेस विदाउट शेयरिंग द रॉ डेटा। हमें पता है कि यहाँ पे हम डेटा जो है रॉ डेटा शेयर नहीं करते हैं, जो भी अपडेटेड पार्ट है उसको हम शेयर करते हैं, राइट? नाउ एफएल सिस्टम कंपोनेंट्स आर लाइक सेंट्रल सर्वर। क्या क्या कंपोनेंट रहेगा आपका? सेंट्रल सर्वर रहेगा that aggregates model updates using Federated algorithm and it maintains a global model which, ठीक है? तो एक सेंट्रल सर्वर रहेगा, देन एज डिवाइसेस that is mobile phones, IoT sensors, hospitals, whatever the means devices wherever put. Okay, this trains a local model on the private data. Then aggregation process means server collects, no, just before that we have obviously local model that is identical architecture to the global model. जो global model है उसके ही जैसा same local model का architecture रहेगा, but it is trained on device specific data for any box. Then aggregation process, server collects the gradients or weights, मतलब जो भी update हो रहा है वो collect करेगा. Okay, it applies weighted averaging and then broadcasts the updated global model back to the client. जो भी updated model रहेगा वो हम clients को return कर देंगे, ठीक है? तो what is the flow? Architecture flow ये है कि first server distribute global model, clients train locally, then upload the updates and then server aggregates and then repeat. Okay, तो ये चलता रहेगा ना। की प्रॉपर्टी ये है कि रॉ डेटा नेवर लिव्स द डिवाइस एंड ओनली द मॉडल पैरामीटर्स आर ट्रांसमिटेड। ये अभी तक आप लोग जान गए हो, ठीक है? तो इस टाइप से कुछ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हम वर्कफ्लो की बात कर रहे हैं। डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री, लाइक दैट। ओके, सो ये नाउ this federated learning is designed with privacy इसको सबसे important जो है federated learning में privacy है। Unlike traditional ML pipelines, raw data, that is medical records, personal messages, financial transaction, they stay on the user device at all times. Only the updates are shared with a central server, so never underlying on the data. Now, privacy protection कैसे रहता है? Local data isolation. Training happens on device and sensitive data is never transmitted. ठीक है? तो अपने डिवाइस में ही ट्रेनिंग होता है, सेंसिटिव डेटा को हम ट्रांसमिट नहीं करते। देन डिफरेंशियल प्राइवेसी, noise is added to the gradient to prevent reverse engineering of personal data, ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग करके पर्सनल डाटा को ना वो मतलब कलेक्ट कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉइस ऐड कर देते हैं ग्रेडियंट्स में। Then secure applications, cryptographic protocols ensure the server only sees the aggregated updates, right? Then आपका है gradient compression, reduces information leakage during the model update transmission. So इसका एक example like healthcare, a hospital trains a diagnostic model locally on patient records. Only weight updates are sent to our federation. Patient data never leaves the hospital's secure environment, ensuring HIPAA compliance while still benefiting from the collective learning. Okay, now what are the differences between federated learning and centralized learning? Data distribution के केस में तुम देख सकते हो कि in the case of centralized, all data sent to one server. In the case of federated, data stays on the local devices. Privacy level, ऐसा है कि it is in the case of centralized high exposure rings, ये तो हमें पता है. Then federated के केस में strong privacy by design.
Communication overhead, centralized large raw data transfers. और federated में only model updates shared. Scalability, centralized के case में limited by server capacity. Federated scales across millions of devices. ठीक है. So that is these are the differences between centralized and federated learning. Now, what is the cycle we have? First, will be our local computation. Is client just 10 minutes? 10 minutes counts. So training cycle completes in 4 key phases. First, local computation. Each client trains the global model on its private local dataset for several epochs. ठीक है? Computing updated model which without sharing the raw data. ये तो समझ में आ गया. हर एक client जो है वो अपने प्राइवेट लोकल डेटा सेट को सेवरल इपॉक्स के थ्रू ट्रेन करते हैं. अपडेटेड मॉडल वेट्स को भेजते हैं ग्लोबल मॉडल के पास. राइट. Gradient computation. Clients compute gradients or weights deltas representing the local learning signal. Only these gradients, not the data, are prepared for transmission. तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं मेन ही एम है कि हम सिर्फ जो ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है, ये ग्रेडियंट्स को सेंड करते हैं, ना कि डेटा को. सिक्योर एग्रीगेशन, द सर्वर कलेक्ट्स द ग्रेडियंट्स फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेटिंग क्लाइंट्स एंड अप्लाइज एग्रीगेशन. राइट. देन इस ऑब्वियसली समेशन जितने भी हैं वेटेड हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं. देन मॉडल अपडेट, द एग्रीगेटेड मॉडल is redistributed to all clients, completing one communication round. This cycle repeats until the convergence. तो ये जो aggregated model है इसको फिर से हम redistribute करते हैं और ये cycle आपका repeat रहेगा कब तक, जब तक convergence नहीं हो जाए. ठीक है. So you can see here, this is the feed average aggregation global weight. हम कैलकुलेट कर रहे हैं sum of nk by n star wk for k clients. So one round is local train, gradient upload, aggregate, and then broadcast the updated model. Now यहाँ पे आप देख रहे हो बार बार this is feed average algorithm. Weighted, तो की कॉन्सेप्ट ये है कि weighted averaging of the model parameter, not that this is the core insight of this algorithm, feed average algorithm. Okay. तो ये जो algorithm है federated averaging, this is the foundational algorithm in federated learning. Okay, and it was proposed by McMahon in 2017. McMahon ETL. Okay, then each client trains a local model on its private data for several epochs, then sends only the model weights to the central server. The server aggregates these weights using a weighted average based on the number of local samples. Like W global is equal to summation of nk by n to wk. ये weighted average, right? Now here nk is the number of samples on client k, and capital N is the total samples, and wk are the local model weights. The process repeats over multiple communication rounds until convergence, and it reduces communication costs while preserving the data privacy, as raw data never leaves the client's device. Okay. Now हम एक इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं. Let me just show you briefly. Just give me 1 second. Okay. Okay. Now we can see this code. Import calls, and then torch the NMS and then import calls dot something. Then we define a simple network model with the help of this NM module. यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है नेटवर्क एक्सेलरेटर 428, देन वीडियो में यूज किया हूँ, और उसके बाद एमसीक्यू एन डॉट लिनियर 128.0, देन फॉरवर्ड, देन वी हैव instantiated the global model, simple model, and model architecture दिखा देंगे हम. Then local train,
जो है उसमें epox 5 यूज कर रहे हैं। ठीक है, एलर्जिकल 0.01 optimizer, and then thereby we put the values and then this uh, so इसको रन करने से हमें ये मिला है मॉडल आर्किटेक्चर। अब इस कोड को हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये कोड पहले, ठीक है, इसमें ये जो डिफाइन local train model that the epoch 5 LR is equal to planning rate 0.01. Okay, optimizer cost dot optim is the model dot parameters LR equal to that. Criterion is equal to n dot n cross entropy loss. Model train here for epoch fetching this. Yeah. For X batch, Y batch in the loader, optimizer dot zero bread output model X batch. Loss criterion outputs like this. Loss banquet model state, then model state. तो स्टेप है this thing. ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लोकल क्या बोल रहे हैं ना लोकल ट्रेन राइट दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट why that's first the purpose of this function the purpose of this function is uh, to train a neural network model on our data and returns the updated model with attention. And we commonly use these data things in iterative learning. For each client trains the model on its own data set, instantly that it waits to the server. If इसका नाम हमने इसलिए लिख के डाला है, इसमें काम ये है जो है ये इसका जो डेट अपडेटेड थीम है आपको फिट करना है ऐसा उसको हम अब लाइन बाय लाइन देखेंगे यहाँ पे बैक मॉडल है कभी कभी बहुत 5 times लिया है पहला चाहिए था इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है यूजर मतलब मॉडल है राइट डेटा लोग क्या करते हैं it supplies the training data in batches epochs 5 लिया है हमने number of complete process whatever process and then I will one तो ये learning rate है that controls how much the weights are information next जो है हमने क्या है optimizer right optimizer calls the company as the model parameters तो ये क्या करेगा ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर को क्रिएट करेगा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट समझ में आ रहा है और ये जो मॉडल द पैरामीटर्स इट गिव्स ऑल ट्रेनिंग वेट्स एंड बायसेस मॉडल पैरामीटर्स इनको सब जो ट्रेनिंग वेट्स एंड बायसेस सब मिलेगा और एमआर से हम स्पेसिफाई करते हैं इसका पार्ट क्या है इसका पार्ट ये है जो मॉडल वेट्स को model weights है इसको update करना after each batch. Then we define loss function. Okay. हम यहाँ पे जो loss function use किया है cross entropy. So we create a cross entropy loss function and we use it mainly for classification class. मैंने अपना कितना नहीं क्लास में इंटरजेक्ट क्लास में इन सब चीज चेक कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स में तो ये जो purpose है इसका percentage loss percentage measures the error between the predicted and actual. Then set training and here to plan model into the training that it can choose the nearest normal best normalization be the correctly the trade. This will be then look for the reports for important range box. It is a learning process with a specified number of what on many people million 5 million and 5. Okay. Then read one batch at a time for X batch by mentioning the X batch is simplification, but that's it levels. The other one that divides the data to the speed batches. That is a smaller batches multiply. Now, clear previous gradients, optimal batch, you have remote gradients and the previous iteration. Why? You करते हैं हम ये clinical and more pertinent बताया भी मात्र PyTorch accumulates gradients like so they must be reset before each new batch. हर नया batch start करने से पहले ये जो पुराने हैं उसको reset करता है
the first schedule for the previous episode. Then forward the class. Now, which is the same model as batch. It sends the input batch to the neural network and produces the you get here. Output will be the decline. Now, we got a regulator loss using loss getting the output from our rate, from which predicted from which with two levels and with level, the prediction level, or in a smaller loss lines, the prediction manner. Big propagation loss the framework computes gradient shift and noise irrespective of reading parameter. This gradients of how this rate should change to the reduce to reduce the error. Okay. Thank you. The propagation such a the gradient calculate is the loss with respect to the parameters. Wait, okay. Or these gradients, these are gradients, however, is how is going to change to reduce the error. Then update model books, optimizer workspace, updates weights using the gradients, calculating the propagation, and thereby it will put the methods part. Then we run the update weights, return model statistics, returns the training models parameter, which biases, and after you Federated learning then the algebraic weights for the better this algebraic weights are sent to the central side of the application while local training data relates to the file. So ये mainline time आके return the stat display. Okay. So ये information है DICT sorry return some models parameters after the parameter points and classes. तो इसका अगर आप ये पूरे प्रॉब्लम का वर्कफ्लो देखोगे तो कैसे हो रहा है स्टार्ट initialize optimizer loss function set model to training mode repeat for TCPOP with one batch of data clear previous gradients forward pass compute loss and then propagation update weights and repeat update all finish then we end up with it which here इनका पूरा प्रोसेस कोई डाउट नहीं तो लोकल ट्रेन जो है it trains a neural network using local training that initialization SCP so initialization SCP of optimizer and cross and loss patterns of forward propagation and computes the loss use rate propagation to calculate the gradients and update model weights and finally returns the update model parameters at DICT. This function that we use commonly in data planning, but only the trained model which are shared server preserving the privacy of the. So अभी मैं यहीं पे as complete platform class make practical भी देख लिया. I hope इस practical अगर clear हो गया होगा, clear नहीं भी होगा कुछ